Hello, my dear students. Welcome to my computer science class. So, students, we were studying the chapter Charts in MS Excel, which is your fourth chapter from class 7 computer science book IT Planet. We have studied about the introduction, the advantages of charts, and the different types of charts. So, today we will start with the components of chart. So, the first component of chart is the x-axis. This is the x-axis. It is the horizontal axis, and it is also known as the category axis because generally on the x-axis are the different categories. Like if I am creating a table with headings of different subjects, name of students and subjects and their marks obtained. So the different subjects will be here, and this is the y-axis, which is the vertical axis, and it is known as the value axis. So the marks obtained will be on the y-axis. So the value of each data series is plotted on this axis. On this y-axis, the values are plotted and the categories are generally plotted on the x-axis. Now next is data series. What is data series? It is a group of data from which a chart is derived. So your data series is this. Like this is your in the table, the values which we have used for creating the graph is the data series. Next is the chart area. So this whole area in which the chart is plotted, all the chart components are there, is called as the chart area. So this total area around this yellow box is the chart area. All the components like the data labels, y-axis, x-axis, the legends, everything is inside the chart area. Then second is plot area. Plot area is the area where the actual chart is there. जो भी आपका actual chart है, the actual chart जो है वो it is inside this red colored box. So this is the plot area. This yellow colored box is the chart area. Chart area क्या है? Yellow colored box के अंदर सारे components होते हैं and that is your chart area. Now chart title. This is your chart title. जो भी आपका chart का heading है that is called as the chart title. Now next is axis title. आपने x एक्सिस और y एक्सिस पे कोई हेडिंग लाइक यहाँ पे लिखा इट्स गुड, इट्स एक्सेलेंट, गुड, तो ये जो है ये कैटेगरीज जो है इसके लिए हम एक हेडिंग दे सकते हैं x एक्सिस की कि ये क्या चीज़ें को डिनोट करता है. दैट इज़ योर x एक्सिस टाइटल. एंड y एक्सिस टाइटल पे क्या होगा, लाइक वैल्यूज़. यहाँ पे आप लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर्स और जो भी रेटिंग मिला है उसको हम y एक्सिस पे डिनोट कर सकते हैं. नाउ द ग्रिड लाइंस. द ग्रिड लाइंस आर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑन द प्लॉट एरिया. ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे हैं दीज आर द ग्रिड लाइंस एंड दे हेल्प in giving an idea about the value. So इससे आपको ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता चल जाता है. नेक्स्ट इज डेटा लेबल्स. जो भी ये वैल्यू है लाइक यहाँ पे दिस बार, इस बार का वैल्यू इज 400. सो दिस इज कॉल्ड एज द डेटा लेबल. यहाँ पे दिस 300 इज ऑल्सो द डेटा लेबल. 25 is the data label. Data label is the value and it gives an additional information on the data points. ये भी जो भी data है उसका additional information के लिए this data label is there. And next is the legend. Legend are generally placed on the right of the plot area and it identifies each data series. जो भी data series है, ये एक data series है, next data series, उसको identify करने में help करता है because वो एक इधर एक डिफरेंट कलर आपको असाइन करता है डिफरेंट डेटा सीरीज़ को, या कुछ डिफरेंट पैटर्न प्रोवाइड करता है. लाइक आप जब मैथ्स में बार ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप क्या करते हैं, यू शेड द एरिया. किसी को आप
ऐसे स्ट्राइकिंग डायगोनल लाइंस में करते हैं, किसी को आप हॉरिजॉन्टल लाइन से करते हैं, और यू डिफरेंशिएट इट विद कलर्स. So it is placed here generally on the right side of the plot area. Let me show this to you. So this is the legend. ये जो है यहाँ पे this is called as the legend. यहाँ पे आपको इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, आपके ग्राफ को आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, अपने चार्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, उसके लिए यहाँ पे legends होते हैं. And as I have told, this is the axis title. It was not in the previous chart, so here it is written months. So this is the axis title. The y-axis title is sales, cost and profit. So this is here axis title. One more thing, this is the primary vertical axis and this is the primary horizontal axis. This x-axis is the primary horizontal axis and this is the प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस. अगर आपका जो चार्ट है वो कुछ और एक्स्ट्रा डेटा प्रोवाइड करना चाहता है तो वी हैव वन मोर एक्सिस हियर. दिस इज द सेकेंडरी वर्टिकल एक्सिस. वाई जो आपका वाई एक्सिस है उसका यहाँ पे ये दिस इज द प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज द सेकेंडरी वर्टिकल एक्सिस. एंड हम इस एक्सिस को भी यूज़ कर सकते हैं अपना और हेडिंग्स, अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा डेटा प्रोवाइड करना है उसके लिए हम कुछ हेडिंग्स और ऐड कर सकते हैं. So this was about the components of chart. Now let us see how can we create a chart. So what is a chart? As I have already told, it is a graphical representation of data and we can create chart to compare data and view the different patterns and trends in a more attractive way. So what we can do, हम चार्ट क्रिएट कर लेते हैं एंड देन वी हैव डिफरेंट टूल्स इन दी चार्ट्स. लाइक उसमें उसका जो ये जो रिबन होता है चार्ट टूल का, उससे हम बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं. तो लेट अस फर्स्ट सी कि हाउ कैन वी क्रिएट अ चार्ट. तो इसके सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द रेंज ऑफ डेटा. आपको वो जो डेटा का रेंज है वो सिलेक्ट करना है जो भी आपको आपके चार्ट में चाहिए एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस इंसर्ट टैब. ये रिबन पे जो ये इंसर्ट टैब है इस पे आपको क्लिक करना है. देन आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली देख सकते हैं इतने सारे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट एंड इसमें से आप कोई भी टाइप ऑफ चार्ट चूज कर सकते हैं. आई एम चूजिंग अ कॉलम चार्ट. सो यहाँ पे 3D का ऑप्शन है, आई एम यूजिंग दिस ऑप्शन एंड ये आपका ऑटोमेटिकली जैसे ही आप क्रिएट करते हैं ये आपका चार्ट, this chart appears here. Now अभी ये चार्ट आपके डेटा टेबल के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, सो यू कैन आई विल मूव इट हियर. जैसे ही ये प्लस साइन आता है, दिस प्लस साइन, उसको आपको ड्रैग करना है. यू हैव टू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन एंड देन यू कैन ड्रैग एंड मूव इट. The chart automatically appears on the same sheet of Excel in which your table is there. But if you want to move it, we have an option move chart. We'll click on this and I can create a new chart or I can specify a specific chart. So what will happen? I have clicked on new sheet and the title will be chart 1 and I have clicked OK. So एक new sheet open हो गया and in which ये chart, this chart has been placed. So now I am opening the original sheet and I am again creating so that you all can view it properly. So this was the chart. Now first is moving the chart that I have shown you. Second is resizing the chart. So these are there are different, you can see these are circular icons here. आपको जिधर से भी चार्ट को इंक्रीज करना है, you just have to place it here. A double arrow will appear
एंड आप उसको लेंथ वाइज इंक्रीज कर सकते हो. यू कैन इंक्रीज इट हाइट वाइज ऑल्सो, और इफ यू वॉन्ट यू कैन इंक्रीज द होल चार्ट. So in this way you can increase the size of chart or you can decrease it also. You just have to click on the these corners, edges, and click the left mouse button, resize it, and then leave the left mouse button. So in this way you can resize your chart. The next feature is changing the type of chart. How can you change the type of chart? उसके लिए आपको क्या करना है? You have to click on the chart. आपको chart पे click करना है. I'm reducing the size of the chart so that it can be seen more clearly. It is more visible. You just have to click on this chart. Then यहाँ पे on this design tab appears when you click on the chart, and here it is written change chart type. Just click on it. It is a column chart, so this is highlighted. I can change it to line chart. It will appear like that, or I can change it to a bar chart or pie chart also. It will appear like that. So you can use any of the different type of charts, and I'm clicking on OK. So the chart type has been changed. Now it is a line chart. If you don't want this, you can again either you can click on the undo button or change chart type again, and then you can choose from these options pie chart. I want a pie chart, so this is the pie chart. Then again if you want to choose, you can change it anytime. Area chart. So this is the area chart. Now the next feature is changing the style of chart. So again what you have to do, you have to click on this chart area, this design tab appears, and here a number of chart styles are there. These are the different chart styles. I want this style, or if I want this style, you can choose it, any of the styles. You just have to click on the different styles, whatever you want, you can choose those styles. So these are the different chart styles. So in this way you can change the chart style. So there are different chart types. You can choose a 3D chart also, which I have told. You can choose a 3D chart also, and you can use a different chart style also. Now changing the layout of the chart, how chart elements are positioned is the layout. आपका जो different elements है वो कहाँ पे positioned है, that is called as the layout, and you can change it. Like so what you have to do, you have to again click on this design tab will appear here. Quick layout is written in few. Chart layout is there, icon chart layout is there. I have quick layout. I click on that and I have selected this. Here you can see chart title, this the legends are placed here, and this is the x-axis, this is the y-axis. So if I want to change the layout, the different layouts, I can change the layout like that. You just have to click on the this chart area, blank area of the chart, and then quick layout is there, from where you can change the layout of the student. These were the few features of charts in MS Excel. In the next part I'll explain few more features of these charts. How can we add more components inside in your chart? So till then students, thank you.